it's a pleasure to have you with us. और आप हमें बहुत अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन कर पाएंगे द टोटल आइडिया, व्हाट इज द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यूरोपियन नेशनलिज्म का मॉडल, इंडियन नेशनलिज्म का मॉडल, और जो हमारा टॉपिक है कि whether it is relevant in Indian context or not. Friends, I'm very glad to be with you, and you must be preparing for your exams on this topic of nationalism, which, as my previous both speakers have very nicely pointed out, is a question of very great importance. And Tushar ji also pointed about 55 crores and tried to relate it to nationalism. I'll come to that in the second phase. But I think first I will begin with that nationalism itself has been a evolving concept, and its relation, इसका संबंध जो है समाज रचना से भी होता है. This I want to clarify mainly because many a times people try to relate it to too much ancient period. Now, there are some geographical zones, there are some linguistic zones which can be called a particular area. But nationalism, or more particularly nation state is particularly a modern concept which begins after the French Revolution and the industrialization. So first, very simply speaking, I must say that human society is not static. It is constantly changing its methods of production and methods of organization. When I mean methods of organization, I mean, for example, in the very initial period, शुरुआत में हम लोग hunter food gatherer थे, tribes थे. There were tribes, right? And that cannot be called a nation by any stretch of imagination. उसके बाद अगर आप देखें तो then we became what we call pastoral society, that you are taking care of cattle. Cattle is your primary source of livelihood and engagement with life. And you are going from one place to the other in search of the greener grass. And that is a pastoral society. So you consume the products from the cattle, and you consume cattle themselves also once they are not able to deliver milk, and because of that. So that is a pastoral society. And the best description of pastoral society we get in our Vedas. Vedas are particularly that pastoral society. This cannot also be called nation in that particular way. I'll come to that when one can call a particular period as a nation and nation state, that I'll come. Now, after this, not in a linear way, but some way comes the agricultural society. And agricultural society is the first society when people start settling in a particular area. Now, hunter food gatherer, you can go on shifting from one area to another. Pastoral society, पशुपालक अवस्था में भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. अब जब खेती आप करने लगे हैं तो एक जगह खेती के लिए आपको रहना पड़ता है. And that gives birth to the kingdoms. राजाशाही, जो आजकल हमारे दिमाग में बहुत घूमती रहती है. हमारे राजा अच्छे थे, दूसरे राजा खराब थे. आज का राष्ट्रवाद ज्यादातर उसी के चारों तरफ घूमता है, हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो राजाशाही का पीरियड आता है. और राजाशाही में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजाशाही में भी जो व्यवस्था होती है वो एक व्यक्ति के ऊपर आधारित होती है, द किंग. वो कानून बनाता है, कानून लगाता है और सजा भी देता है. आजकल तो हम अच्छे राजाओं की तलाश कर रहे हैं कि किसने अच्छा काम किया, कौन बहुत भयानक था. पर मुख्य रूप से एक बात निश्चित थी कि राजा लोग धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे. राजा लोग राज्य करते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए. उस पर मैं नहीं आऊंगा. पर खैर, अब होता क्या है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई प्रक्रिया चालू होती है. A new process starts, and that is the introduction of technology, the marriage of science with production process. And here your production starts going up by leaps and bounds. And this state of production also gives rise to a new class which takes the initiative. एक नया वर्ग जो इसमें अपना सामने आता है, उद्योगपति वर्ग. The businessmen, industrialists come forward. और उसी के साथ एक और वर्ग अस्तित्व में आता है, वो है मजदूर वर्ग. पहले फैक्ट्रियां नहीं थी,
लोग अपने दस्तकार थे, लोग खेती पे काम करते थे। अब फैक्ट्रियां बनना चालू हो गई, फैक्ट्रियों में मजदूर आना चालू हो गए। तो फ्रांस का थोड़ा हम समझें तो हमको बहुत अच्छी आइडिया आ जाएगी। इसके पहले जो फ्रांस में व्यवस्था थी, फ्रांस की व्यवस्था में एक राजा है और एक धर्मगुरु है, किंग एंड द पोप। हमारे यहाँ उसका स्वरूप अलग था, हर जगह यही पैटर्न यही रहा है कि राजा राजगुरु, नवाब शाही इमाम, और किंग एंड द पोप। तो वो इनका जो अलायंस रहता है वो गांव के लेवल पे भी रहता है। जमींदार और धर्मगुरु, वो अलग धर्म आप बदल सकते हैं पर ये एक रहता